So hi guys, this is Harsh Gagrani, and today we have with us 3, 7, 11, 12 LEtians who pretty much all of them are going to NLS Bangalore in in starting their session in 2024, and pretty much all of them are under All India Rank 100. And so बस एक quick सा panel discussion अपन यहाँ पे करेंगे over the next I think 45 minutes or so. And so that's it. Let's start now because it's not a one-on-one interview. और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे students हैं, so what I did was मैंने बहुत सारे one-liner questions यहाँ पे लिख के रखे हैं जहाँ से अपन start करेंगे, and I'll just take their opinion on all of these questions before moving on to such questions जहाँ पे अपन जहाँ पे बहुत लंबी लंबी बातें करने वाले हैं अपन उनके आंसर्स के अराउंड, राइट? सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो मैं इंट्रोड्यूस यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ. इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो दो चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज योर नेम एंड दैट योर ऑल इंडिया रैंक. वो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग के नाम और ऑल इंडिया रैंक सामने लिखी हुई है. सो विल जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इटसेल्फ. माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन हियर इज, अगर उस क्वेश्चन पे अपना आंसर है यस तो जस्ट शो ऑफ हैंड्स ऐसा ऊपर कर लेना, और आंसर है नो तो कुछ नहीं करना है, राइट? तो आंसर है यस तो अपने को क्या करना है? परफेक्ट, राइट, दैट्स गुड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू read a newspaper daily in the last 1 year, or read newspapers on at least 300 days out of the last 365 days? Show of hands. Okay, barring 2 students, I think everyone in the panel. ठीक है, that's one. Perfect. Number 2, कितने लोगों ने एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ा था on most days? It can be The Hindu or Indian Express or Times of India, The Hindu or Times of India, The Hindu or can be any 2 newspaper. And I'm presuming ये 2 English newspapers थे, right? Yes, चलो perfect, ठीक है. That's number 2. Number 3, एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे पूछते हैं, कितने लोगों ने डेली नोट्स बनाए थे अपने न्यूज़पेपर के? शो ऑफ हैंड्स. ऑन मोस्ट डेज ऑब्वियसली, कितने लोग ऑन मोस्ट डेज यूज्ड टू क्रिएट न्यू नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर? ओके, एंड डज इट मीन कि नोट्स की एक पूरी कॉपी बन गई थी? A big fat notebook. Yes. So for me, how it went was I used to pick up Indian Express ka explain page and then I used to make notes. So last में I had a copy of all the basic जो facts होते हैं explained के, and then I was going through them in 3-4 hours. Okay, and that copy was extremely useful in the last few weeks. Right, it Before was. Okay, perfect. ठीक है, ठीक है. तो ये 3 questions. Question number 4, कितने लोग अगस्त 2023 तक एटलीस्ट एक सेक्शन छोड़ रहे थे अपने मॉक्स में? अगस्त के पहले कोई भी एक सेक्शन कोई ना कोई रीजन से छूट जा रहा. एनीवन? एंड देन बाद में वो सेक्शन पिकअप करना स्टार्ट किया. सो 1, एनीवन एल्स? आदित्य के अलावा और कोई? 2, यशस्वी एंड आदित्य. ओके, गुड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलवेज बीन अ रीडर? Always been a reader. How many of you have always been a newspaper reader? Even before CLAT came into the picture, उसके पहले भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, या इवन हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे? हाथ उठाओ. फिक्शन वाले हाथ उठाओ. Always been a fiction reader. नॉन फिक्शन वाले हाथ उठाओ. सेल्फ हेल्प वाले हाथ उठाओ. यू कैन विन. और वो कौन सी सेल्फ हेल्प बुक्स आती है यार, वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसा कोई था जिसने वो बुक्स पढ़ी? नहीं. ठीक है, परफेक्ट. कोई वो वाली बुक्स पढ़ के तो रीडर नहीं समझ रहा है अपने को, वो आई टू हैड अ लव स्टोरी, ऐसा कोई था जिसने वो बुक्स पढ़ी है? नहीं. परफेक्ट, गुड. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू स्टडीड फॉर more than 8 hours on an average?
for most part of your journey? More than 8 hours per day on an average. I think almost half of the panel. How many of you studied for less than 5 hours on an average? One, less than 5 hours, not less than 8 hours, less than 5 hours on an average. Two, Ashutosh and Prajwal. Okay, good. Okay. How many of you were scoring less than 60 marks when you started off? How many of you were scoring less than 60 marks in your mocks when you started off? कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अभी चालू करेंगे या कर रहे हैं या अपनी जर्नी में बीच में कहीं है वो इसी स्कोर के अराउंड कहीं पे होंगे. This would be a very useful data for them. Just please हाथ ऊपर ही रखना. How many of you scoring less than 60 marks when you started off? Okay, perfect. नीचे अपन इनमें कुछ क्वेश्चंस पे वापस आएंगे इस पे और डिस्कशन करने के लिए. ठीक है. How many of you prepared for more than 12 months? Prepared for CLAT for more than 12 months? More than 24 months? Pranav, perfect. 3 साल से, very good यार, inspirational. Okay, more than 12 months, I think 4-5 students. ठीक है. Less than 6 months? Anyone who prepared for less than 6 months? Okay, ठीक है. How many of you are freshers? How many of you are freshers? I think barring 2 students, everyone is a fresher. ठीक है. तो I think एक बहुत important question होगा कि ये करा कैसे? So boards, CLAT alongside boards. So ठीक है, we'll come back to that. Was there any time जब ऐसा लगा था कि टॉप 5 तो बहुत दूर की बात है, बट ऐसा लग रहा है अभी क्लैट भी नहीं निकलेगा? कितने लोगों के साथ ऐसा टाइम कभी आया था, जेन्युइनली आया था कि ऐसा लग रहा था कि यार नहीं नहीं निकलने वाला है? 3, एनीवन एल्स? 3 स्टूडेंट्स. ओके, गुड. लास्ट क्वेश्चन. जब रिजल्ट आया तब से लेके अभी तक कितने लोगों ने कम से कम एक बार किसी ना किसी के मुंह से ये सुन लिया है थोड़ा बेटर भी कर सकते थे यार? कितने लोग? कितने लोगों का कंपैरिजन शर्मा जी के बेटे के साथ अभी भी हो रहा है, तो बेटर भी कर सकते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. 1, 2, 3, 4, 4, 5 स्टूडेंट्स. अच्छा, बेटर भी कर सकते थे का मतलब क्या है? तो क्या सुना, कोई बता सकता है क्या? एनीवन? स्तुति, प्रणव, मान्यता, मनुजा. So the score primarily. I mean, the rank was dependent on the score. My score was 99.75, so it has always been like I could have scored more than 100, more than 101. So yeah. Okay, okay. People were expecting a single-digit rank from me. ओहो, such a disappointment. चलो ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और कोई, और कोई? तो क्या सर सुना था? एक्चुअली मैंने जब पेपर दिया था ना, तो आई मेड अ मिस्टेक इन ओएमआर सर्कलिंग सर इन 2 क्वेश्चंस. ओके. तो मेरे जो मेरे मार्क्स 102 होने चाहिए थे, बट ओएमआर सर्कलिंग मिस्टेक्स की वजह से 100 हो गए. तो काफी डिफरेंस हो जाता है रैंक में, तो वो सुना था थोड़ा बहुत. ठीक है, ठीक है. एंड दिस वाज इवन आफ्टर द ऑल इंडिया रैंक केम आउट? मतलब उसके बाद भी थोड़ा बहुत लग ही रहा था कि यार. हाँ सर, मतलब सिली मिस्टेक की वजह से थोड़ा बुरा तो लगता है, बट ठीक है. ओके, ओके, ठीक है, परफेक्ट. So also this year के score में there was this trend कि all of us were expecting 20-30 ranks below what we really got. So that was also there. तो जब rank आई तो फिर everyone was thinking कि ये क्या हो गया एकदम से, कि जिसकी rank 50 आई was thinking कि अच्छा 30-25 उस टाइप की expect कर रहा था. तो that was also there due to the type of paper that was. ओके, ओके. ठीक है. I think let's start with the most obvious question, because most of you are freshers and you've cracked NLS Bangalore and the top 100 ranks amongst 50, 60, 65,000 aspirants alongside your 11th and 12th prep. How did you structureize your prep? तो जब से स्टार्ट करा, जब से सोचा कि मेरे को क्लैट का तैयारी करना है, तब से लेके अभी तक अगर हम मैक्रो फेजेस में देखें
तो वो फेस को स्ट्रक्चराइज कैसे किया था, तब कब 12th को ऊपर रखा, कब क्लैट को ऊपर रखा, और जब 12th या क्लैट को नीचे भी रखा तब उसमें क्या क्या करते रहे. तो start with anyone just can just raise your hand and you can unmute yourself. Shiny, start with Shiny. So in till May or April, I was doing like 50-50 to both 12th and CLAT. So I was giving my mocks, I was reading newspaper and all that. But like I used to make sure कि दोनों side by side चले, and like I did not prefer any one over the other. But after that, I used to prefer CLAT, and I just used to attend classes. अलग से कोई I did not do any self study for 12th after May, but I used to put my 100% in CLAT. And then after October, I stopped attending my classes also. And I put my 100% focus on CLAT. So that's what I did for boards and CLAT. Even when the classes were going on, even when the 12th classes were going on, you still used to attend the CLAT classes. And और आखिरी के 2 महीने के अंदर it was completely CLAT. Yes. And you started preparing 23 itself or from 22? No, last year. I started From preparing. 22. Yes. And how was 22? 22 mein was it P1 CLAT or P1 11th class? Priority 1 CLAT or priority 1 11th class? नहीं, दोनों 50-50 रहता था. Nothing is like फिक्स था कि अभी मुझे ये खत्म करना है साइंस में और ये खत्म करना है क्लैट में, तो ऐसे आई डिड नॉट पुट वन ओवर द अदर. और क्लैट में फर्स्ट ईयर में कौन से 2 सेक्शंस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था? Legal and logical, because these were pretty weak and I was new to them, so I had to work on them a bit. Okay. I think Daksh also raised his hand. Yes, sir. So sir, what I did was, तो मैंने क्लैट की प्रेप इसी ईयर चालू की थी. तो I had structured in that way कि first 3-4 months what you do in CLAT is explore everything. कि होता क्या है, and newspaper reading, books reading, get a habit. These things are what I did from CLAT perspective in the first 3-4 months. And tab I used to focus on my school studies as well because I've got PCM. So that's also important. तो पहले 3-4 महीने you can focus on your school. Then you get a better idea कि how you will go about your prep. So in the next 3-4 months, it's about rigorous hard work. You've understood everything, how to go about your prep, so you can easily go about it. So in the next 3-4 months, it's about rigorous hard work. And I then school ki priority I reduced. Okay. So I really used to go to school, and my school was not dummy, but school wale मान जाते हैं if you do great. तो देन मैंने उसको एकदम कर दिया था, एंड आखिरी 3-4 महीने में इट्स अबाउट मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड फेजिंग आउट. सो नॉट टू मच रिग्रेस हार्ड वर्क आई फील, क्योंकि इट कैन टेक अ मेंटल टोल ऑन यू, बट इट्स अबाउट मैनेजिंग योर मेंटल हेल्थ. एंड स्कूल आई लेफ्ट इन 3-4 महीने. आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि आई एम इन 12th अभी. So it was about structuring in that way. That's about structuring that. ठीक है. Anyone else? Ashutosh. Yeah, hello everyone. So I'm also in the science stream. And initially, when you come into 11th, you feel like there's such a huge jump in the level of subjects compared to your class 10. You used to ace every exam without much hard work. But I had initially to put in a lot of efforts for the school exams. During, suppose, unit tests or my terminal exams, I used to devote those 1 or 2 weeks completely to the school subjects because I would otherwise do really bad in them. And that would also take a toll on my mental health because I've never actually done that bad in any subject. So initially in class 11th, I used to do just random things like pick up some books, try to do diverse reading from sources, and keep in touch with the newspaper. So I had not exactly started any kind of intense preparation dedicated to a certain section. Coming into class 12, I gradually reduced my attendance, but it still stayed above like 65 or 70-ish almost. And towards the last few months, obviously, I gave a lot more mocks and I practiced each and every section every day for almost like 5 hours because I also had to devote a little bit of time to what the subjects were being taught in the school. So yeah, it takes up that way to prioritize the things when you want them to, and to obviously plan out your strategy in advance. I think one important lesson is
तो एक चीज जो बच्चे बहुत बार मैंने देखा गलती करते हैं इस वो दिस और दैट करने लगते हैं. सो इट्स क्लास 12 और क्लैट. सो कोई टाइम पे मैं 12th कर रहा हूँ तो क्लैट पूरा छोड़ दूंगा. आई स्टॉप अटेंडिंग क्लासेस, आई स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, आई स्टॉप अटेम्प्टिंग मॉक्स एंड वाइस वर्सा. फिर वो एकदम से क्लैट का जोश चढ़ता है तो स्कूल पूरा छोड़ दिया. फिर नेचुरली टीचर्स भी पैनिक करते हैं, स्कूल से फोन आता है, एंड देन वापस 12th पे फोकस करने लगे, फिर क्लैट पूरा छोड़ दिया. वहां गड़बड़ होता है. वर्सेस अगर बस दोनों के गियर अगर चेंज करते जाएं, कभी कभी गियर 5th गियर पे कर दिया, बट और उस टाइम पे दूसरी चीज को 2nd गियर पे कर दिया. दैट मीन्स उसको सेम स्पीड पे नहीं भगा रहे, बट थोड़ा थोड़ा टाइम उसको भी देते जा रहे हैं. 80-20 से वो हो सकता है. 80%, 20% टाइम से सॉल्व हो जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू. हाँ प्रणव. हाँ, तो सर आई लाइक टू ऐड हेयर, तो समटाइम्स जैसे एग्जाम्स होते हैं या फिर यू नीड टू रियली डू समथिंग फॉर योर स्कूल का एग्जाम्स या प्रैक्टिकल और एनी सबमिशन. सो वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन डिलीनिएट व्हाट aspects or what sources are essential to your CLAT prep. So for example, for me it was the newspaper, it was a mock जो regularly देना ही था, and one or two other things, analysis and this and that. So you can drop other things ऐसे times पे, and you can balance the essentials along with the school preparation, along with the school का curriculum. परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड? ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, एज इन एनीथिंग विथ मैथ्स, एनी मैथ्स वाले कितने? 1 2 3 4. So I had applied maths. It's not the अच्छा, core अप्लाइड. maths. Yeah, applied maths. ओके ओके ओके. ठीक है. सो ठीक है, अब आते हैं मॉक्स पे. व्हाट वाज योर प्रेप फॉर अ मॉक? हर मॉक के पहले इतना इतना ये तो मैं करके जाता ही था. एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड अनम्यूट एंड कैन स्टार्ट. I प्रज्वल, listen to music. That's it. you listen to music. And I have never given a mock in a center because I live in Turkey, so there was Okay. no center nearby. Okay. So before a mock, you just used to listen to music, calm yourself down, and ठीक है, ये सही है. और anyone else? आदित्य? Sir, before my mock, I used to, on Sunday only, 2 o'clock was our mock. So before that, I didn't study anything else. But what I did was just revise through GK and whatever topics I've covered. I used to just go through them, not like study, but just go through and see the points that I've made and the important things. That's what I used to do before my mocks. Okay. Okay. Anyone else? Right. So another thing that I'd like to add is I used to, after giving every mock, I used to have a voice note or write down certain things about what I felt with each section. And if I was low on time somewhere, if I was running short of time at the end, or I left a particular passage unsolved or unread. So these things I used to note down or record in a voice note even before seeing my score. So this really helped me in equating that with the analysis and the score that I received. And then I used to even revise them before the mock. या फिर the day I'm taking a mock, उससे पिछली रात को I used to pick up 5-7 mocks के these learnings. And then that really helps you get into the mindset of what you don't need to do, what mistakes you don't need to repeat in these mocks. तो हर मॉक के बाद में एक वॉइस नोट डाल देता था अपने आप को ऑन द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन द लास्ट मॉक. एंड वो उस मॉक के बाद ही डालता था बिकॉज उस टाइम पे फ्रेश रहती है इन योर माइंड. हाँ बट अगर आप इफ वंस यू स्लीप ओवर इट तो फिर अब आप भूल जाते हो. हाँ, तो उस टाइम आपके पे इट इज रियली फ्रेश. हाँ, कि क्यूटी में एक ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का था बट वो नहीं बना, तो उसमें क्या इशू था वो भी आपके माइंड में फ्रेश रहता है कि मुझे याद ही नहीं था उसका फॉर्मूला या फिर मेरे पास टाइम नहीं था. तो दोज थिंग्स यू कैन जस्ट जॉट डाउन और रिकॉर्ड एंड देन घर जाके यू कैन लिसन टू इट वंस एंड देन even go through it once more after a week or two. परफेक्ट परफेक्ट.
Shreya, I think you also raised your hand. Yes, sir. Mine was same as what Pranav was saying. After giving every mock and analysis, I used to jot down a few points what I did wrong, in which section I gave a little more time on the questions that I should have kept for later. And before every mock, I used to go through them so that they're fresh in my mind while attempting the next mock. Okay. Prajwal. There was something I realized. It was also part of the reason why I used to listen to music instead of revise. Before CLAT, I believe it's an important attitude to have. Is that, I mean, you've been preparing for months, for weeks, you've been studying GK, you've been doing everything you can. And like a week before CLAT, I realized that I'm already like in my best position to give the exam. And that I don't really need to worry because in the last week, there's not much you can change. If you're nervous, it doesn't help you. If you're revising, I mean, GK revision is important. Otherwise, there's nothing you can do that will change the outcome of your like result. So you should just relax, trust in yourself. That's what I did before mocks. That's what I did before CLAT. And it helped me not screw up in the exam because it was unexpected, especially GK. Perfect. Anyone else? Before the mock, क्या करा करते थे? Anyone can just raise their hand. मैं क्या बात कर रहा हूँ? कुछ तो करा करते होगे या कुछ नहीं करा करते होगे? Manuja. Well, I would drink coffee because that is essential for a good mock. And I similar to Pranav and Shreya, I had a talk of lessons learned from each mock. So I would read through that, and it would help me get in that mindset that I don't have to repeat the same mistakes. And that would help. So how many of you had a list of mistakes that you committed in each mock? How many of you use voice notes for it? How many of you used to jot it down in a copy? Mistake that I made in each mock. Okay, ठीक है. But this is super important. I mean, अगर आप अपने mock की mistakes कहीं पे लिख नहीं रहे हो तो फिर आप उसको भूल जाओगे. I mean, जब आप mock CLAT 12 भी दोगे, आपकी mock CLAT 9 की mistakes आप भूल चुके हो. जब 15 दोगे, 12 की mistakes भूल चुके हो. तो this means नए mocks दे के भी उतना फायदा निकाल नहीं पा रहे हो जितने शायद दूसरे लोग निकाल लेंगे क्योंकि उनको उनकी mistakes याद है. So they might still end up making new mistakes, but at least पुरानी mistakes कम repeat होगी. And that's how you improve. ठीक है. As a part of mock analysis, क्या कुछ और करा करते थे? Except this. Except jotting down the mistakes. इसके अलावा post mock और क्या process था या और क्या किस चीज की habit थी? Ashutosh and Manuja, you please start. Ashutosh, we can start. Yes, so after giving a mock, I used to just go through the question paper once again, obviously identify your mistakes and calculate your score before the actual score comes out. But what I did do was in the GK section, any passage of current affairs that I was completely not familiar with, I used to Google it and go through its Wikipedia pages and try to collect as much information as I could about the topic, because I did not want to feel like I had missed out on some crucial topic of some month. So I used to jot it down in my current affair notes. Apart from that, any passage of legal reasoning, the laws or the terminologies which I had some trouble comprehending. So I used to go through the passage once again, and I used to just randomly Google and search about those laws and just have a quick look at what exactly they entailed, so as to ensure that I would at least have a basic knowledge of any kind of legal affairs that come in the exam, the real exam. Okay, that's wonderful. Anyone else? Manuja. Yes, so I was going to say the same thing as Ashutosh, but I would also dissect every question of GK, as in what were my wild guesses, what was a educated guess. So that would help in regaining my confidence, as in how I can attempt questions that I've already read. So, yes, that was that. कितने लोग अपने सही क्वेश्चंस को भी वापस देखा करते थे? The questions you got right, वापस देखा करते थे. ठीक है. और कितने लोग अपने सारे गलत क्वेश्चंस को, सो अनअटेम्प्टेड, गलत या लेफ्ट, कुछ भी हो सकते हैं, कितने लोग उन क्वेश्चंस को वापस करा करते थे? Used to solve each and every of those questions, जो every question except the right question.
How many of you? Most of you. Okay, okay. ठीक है, ठीक है. Any mock analysis side पे कुछ और ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो रहा है? Anything else you Sir, used I to do would like which worked to for you? add one thing. Daksh, हाँ. So sir, what I did extra was कि जो भी मेरे रीडिंग सेक्शंस में भी मिस्टेक्स होती थी, I used to categorize them according to the question stem and all. And before the next mock, I used to work upon them. Okay. Used to So it categorize the question was, stems. yeah, To categorize the question stems जो गलत जा रहे हैं, and before the next mock used to ensure कि उन question stems में sufficient practice हो जाए, at least in logical reasoning. yeah, क्योंकि वहाँ पे हम question stems को अलग कर सकते हैं. कुछ sections बिल्कुल ही contextual yes, होते हैं, and but logical reasoning में assumptions, paradox, flaw, strength and weaken. ठीक है. and even in legal वगैरह जैसे कोई टॉपिक ज्यादा गलत हो रहा है तो I tried to make a pattern out of mocks. Okay, okay, okay. कि I guess I'm struggling in this or that, तो उस पे थोड़ा hard work, तो it also ensured some confidence as well. Okay, guys, just a second यार बस. Okay, ठीक है. Yashasvi, you were saying something? So what I was saying is जीके का जब हम लुकअप करते हैं, लाइक जो टॉपिक हमने सही से नहीं किया या फिर जो सही से किया वो भी, उसकी डीप रीडिंग करना, लाइक उस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक मेरे को इस तरह से याद होना वो कि आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे. बिकॉज आई डोंट थिंक कि जीके में जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग जो चीजें चल रही है वो ही पूछेगी क्लैट, वो कुछ भी बैकग्राउंड में से निकाल कर पूछ लेगी. सो लाइक यू नीड टू नो द हिस्ट्री, यू नीड टू नो द बैकग्राउंड, यू नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट. तो एक एक डिटेल निकालना और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं खुद से पूछना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अनदर थिंग इज इंग्लिश एंड लॉजिकल. उनमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंग्लिश को लॉजिकल की तरह अटेम्प्ट कर लेते हो, लॉजिकल को इंग्लिश की तरह. तो उस चीज को एनालाइज करना कि आपने यहाँ पर ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा, या फिर यहाँ पर आपको एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना था, लेकिन आपने एक पैसेज को लेकर, लाइक इंग्लिश में कैसे हम लोग जो बैक स्टोरी बता रहा है जो भी पैसेज में है उससे रिलेटेड कोई सा आर्ग्यूमेंट रखते हैं, वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया. इस तरह का एनालिसिस करना बहुत मुझे यूजफुल लगा. आप में से कितने लोगों का वीकेस्ट सेक्शन वाज मैथमेटिक्स? के सेक्शन मैथमेटिक्स. मनुजा, कैसे इंप्रूव किया? Sir, I solved about 2 to 3 DI sets every day from Jan to November till I was okay with it. I think all of the doubts I asked were related to maths. And I think you sent a lot of voice notes. You were the Yes. ones who हाँ. You solved 2 to 3 DI sets from Jan to November और ऐसे मैथमेटिक्स इंप्रूव हुआ. ठीक है. I think that's the simplest but the most effective piece of advice that anyone can get. और उसका बस ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है. कितने लोगों का वीकेस्ट सेक्शन वाज जीके? एंड बाय वीकेस्ट सेक्शन मींस सेक्शनल रैंक में पीछे आते थे जीके में. कितने बार ऐसा लगता है नहीं और बेटर कर सकते हैं, बट सेक्शनल रैंक में कितने लोग जीके में पीछे आते थे? बताओ. ठीक है. दिस वुड बी इंटरेस्टिंग. इसको कैसे इंप्रूव किया? एनीवन जस्ट रेज योर हैंड. और आस्था. So for me, I think GK Fiesta helped a lot. I had started preparing in August 2022, and I think April we had started GK Fiesta, and after that my scores increased a lot. So I think taking GK Fiesta very seriously is important. इन जीके फिएस्टा वेरी सीरियसली इज इंपॉर्टेंट. तो मंडे को जब टॉपिक्स आ जाते थे, हाँ, मंडे so I would make या notes ट्यूसडे, of all 10 topics. you would make notes of all the 10 topics every week. Yes. ठीक है. कितने लोग जीके फिएस्टा को बहुत सीरियसली लेते थे? अच्छा, बाकी लोग सीरियसली नहीं लेते थे. ठीक. ये पोर्शन एडिट होने वाला है. ठीक है. सेकंड हाफ जो था इसका वो एडिट होने वाला है. ठीक है. नहीं होगा ऑब्वियसली. ठीक है. परफेक्ट. तो जीके फिएस्टा
डेफिनेटली सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बताओ जीके इंप्रूव कैसे किया आदित्य? Yeah, so okay. अच्छा ठीक है, आशुतोष, आदित्य, एनीवन। हाँ, एक एक करके ना। Yeah, so initially I had not started preparing any personal notes for GK. I was only going through the monthly magazines like CLAT Post ho gaya, तो reading them I used to think कि okay याद हो गया होगा most चीजें. But then around August or so I started making sheets. I watched a few legal ed videos on YouTube as well, how to help to categorize your GK into sections like current affairs, including foreign affairs for one entire copy, and policy issues of India, environment, and so on. After I categorized, I got an overview of what kind of topics could be asked, and I developed a skill. For example, the central vista redevelopment. I used to write about the Lok Sabha, and then I used to dig deep into its history and anything that could be related to it, or for example, Chandrayaan. So after I did that, I gathered a lot of contextual information behind every topic that was trending in each month, and I gradually improved my GK scores. Initially, I had no idea about so many things, and I gradually helped amass a sort of lot of information with myself, and I used to go through those sheets every day. Like I would pick up one genre, for example economic affairs or something, and I would go through the 5 or 6 sheets. I'd also leave some blank space under each topic so that I could add to it later after I appear a mock, after I come across some new information which is related to that topic. So yeah. And you had a physical notebook or some notes section in your phone or laptop? I tried to do it on laptop initially, but then I felt it was getting really messy and I could not just go to any kind of point. And so I just started making my sheets, and I had physical sheets. And obviously, I think it instills a sense of seriousness in yourself, because after I made my documents on laptop, I didn't exactly open it quite frequently. But after I had my physical sheets with me, I used to go through them almost daily, at least a few sheets every day. Okay. Aditya? Sir, I think my problem was that till June or July, I used to cover a wide range of topics. Sir, from every possible source, I used to go, and it was never ending. And still, I was not able to score good in GK. And I realized that. Then I talked to my mentors and all, and then they told that I should focus on one source more and then revise it thoroughly. Because when the topics came in mock, I was able to recognize them, but the questions I could not remember that, yeah, I have studied this, but I could not remember at that moment. So what I used to do was I then stick to only one source after July, and then I thoroughly revised it again and again. So that was really helpful for me. My score increased after that only. Before that, I was not able to score good. Okay. Anyone else? इसका जीके वीक था but improve किया, श्रेया? And then So Manyata. one thing other than everything that's mentioned, I started preparing GK with a friend of mine who was also giving CLAT. So we started to quiz each other on topics. So we used to decide that today we'll do the space sector. So every single topic in the space sector that had happened in the year that we've made personal notes of, used to quiz each other. So I think there's a difference when you're just reading the same facts over and over, and when you're actively recalling when somebody's asking you the question. I think that improved my GK scores a lot. And this technique is also known as active recall. So active recall is जहाँ पे आपने कोई एक इन्फॉर्मेशन स्टोर तो कर ली अंदर, बट ऐसे तो डेली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते ही रहते हैं अंदर, बट अगर किसी ने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा तो फिर हम वो एफर्ट लगाते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए, और अगर वो 2-3 बार कर ली तो वो फिक्स हो जाती है अंदर, और अगर वो नहीं करी तो वो अंदर खत्म हो जाती है. सो इसलिए हमें इवन दो मतलब आउट ऑफ मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन वी आर ओनली एबल टू मेमोराइज 10-20% ऑफ द इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज बाकी सब तो जाती रहती है. सो एक्टिव रिकॉल इज दैट वे फैंटास्टिक टेक्निक. इसलिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए समथिंग लाइक अ जीके फिएस्टा इंपॉर्टेंट है. जीके फिएस्टा हो कुछ भी, जहां पर भी आप पीरियोडिक टेस्टिंग कर रहे हो तो आप फोर्स कर रहे हो अपने दिमाग को कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाले. सो उससे वो फिर परमानेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है अपने माइंड में. ठीक है, कितने लोगों का लॉजिकल वीकनेस था और इसको इंप्रूव किया? एनीवन, कैसे इंप्रूव किया? क्योंकि लॉजिकल इज वन ऑफ दो सेक्शंस जो कितने बार वो निकाल पाना कि मैं क्यों नहीं इंप्रूव कर पा रहा हूं, जस्ट दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज सुपर डिफिकल्ट. So anyone, how did you improve your logical section?
So what या I फिर ये भी used हो to सकता है, ये भी हो सकता है आई वाज नॉट एबल टू इंप्रूव माय लॉजिकल सेक्शन, आखिरी तक मेरा वीकेस्ट ही रहा, बट ठीक है, बाकी सेक्शन से मैंने कॉम्पेंसेट कर लिया, बट ठीक है. हाँ, एनीवन. मान्यता, विल स्टार्ट विद यू. अच्छा, शाइनी, you were also answering. Shani, just answer after Manyata. Initially, logical, I used to think okay, logical is my strong section. I used to score good in logical. But over the time, last में आते आते mocks वगैरह में भी logical में the score used to be very low. It was like in the last month also I was struggling with this logical section only. But I mean I used to score on an average around 15. So मेरा यही रहता था कि I have to improve on this. Eventually end तक यही रहा, ज़्यादा improve नहीं हुआ. But on that CLAT day, I think I scored pretty well. But still, I did not give up. I mean, I used to analyze what I'm doing wrong, कौन से questions गलत जा रहे हैं, try to understand the approach. But on the CLAT day, I was able to perform pretty well. I mean, I scored 17, which is good according to the level of difficulty. So I used to analyze mocks. I used to solve previous mocks also, logical cup as sectional. And then used to check on some mistakes I'm doing again. If I'm repeating the same mistakes, वगैरह. So yeah, it improved thoda. Analysis of mocks and even solving previous mocks. Yeah, solving previous mocks as sectionals. It helps. As sectionals. Okay, okay. Shiny? So what I used to do was that I used to practice logical like maths, like people solve maths every day. I had to do that for it. So every day I'll take like at least five passages from any book, and I used to solve them. And then my scores they did not exactly improve. They sometimes fluctuated a lot. They sometimes stayed stable. So just to fill myself with confidence, I used to practice the 5 passages every day. और फिर उसमें जैसा स्कोर आता था, I used to like feel confident, और फिर CLAT वाले दिन भी I scored pretty good in that. How many of you solved GMAT questions? Like a lot of GMAT questions. कितने लोग? 2-3 लोग. GMAT or LSAT, GMAT/LSAT questions. A lot of them. कितने लोगों ने एक भी नहीं करा? Prajwal, anyone else? Stuti, Yashasvi, Daksh. Okay, okay. ठीक है, that's good. ठीक है, ठीक है. यार एक बात बताओ. Also, हाँ प्रणव, हाँ ठीक है, ठीक, प्लीज कंटिन्यू. Sir, I wanted to add in logical reasoning. So, whichever question I got wrong, I used to write down what I thought during the examination or किस part से I took out the answer, and then I used to read the explanation and explanation की summary also in 2-3 lines I used to write down. And then जब वो आपके पास लिखा होता है, तो when you go through it again, when you go through the question again, and when you read what your explanation was and what the examiner wants you to think. तो जब you go through that again, कुछ realization भी उसमें आता है, और जब आप वो किसी अपने mentor या किसी teacher के पास भी लेके जाते हो, वहाँ वो लिख के, तो he is able to better point out कि where you are going wrong. So I am a big fan of writing in that sense कि besides every question I got wrong, I used to write down what mistake I did in that question. Write down what mistake you did. So can I add another point? Sure. Daksh. So sir, what happens is in this era of Telegram, we've all got quite a number of mocks. So it's an issue that happens कि when you are giving mocks of different coachings, so you get accustomed to reasoning of that coaching. So for example, in a XYZ coaching mock, every extreme option gets eliminated. तो यार you are making a perception कि ऐसा हर बार हो जाएगा. So it's very important to know the concepts clearly and don't get accustomed to anything. Know the concept clearly, and ये वाला जो problem होगा, so I'll tell you इसमें coaching का perspective इसमें ये होता है. Every coaching has certain good content writers, question makers, and faculties. And all of these are humans. So essentially there are 6-7 humans who are creating questions for each coaching. और ये सब humans उस section को सालों से देख रहे हैं और पढ़ा है.
तो उनका एक माइंडसेट होता है, जो माइंडसेट फिर वो क्वेश्चंस में दिखने लगता है। एक सजेशन जो मैं यहाँ पे तुम लोग को नहीं, जो लोग सुन रहे हैं उनको दूंगा, दैट वुड बी solve the previous year's questions even before you start your prep. Solve the previous year's questions of logic, legal, I would say even English. मैथ्स और जीके करो नहीं करो ठीक है, जीके तो इतना वो ऊपर से देख भी लोगे काम हो जाएगा, मैथ्स में इतना, बट जो कितने बार बाइसनेस आ सकता है, what Daksh is talking about, वो biasness उतना नहीं आता है if you have solved previous question. And now students preparing for CLAT 2025, they would have access to 5 CLATs now, 20, 21, 22, 23 and 24, ever since the pattern changed. So that would be really useful. So at least वो 3 sections के previous years questions करने चाहिए, और not just once, I would say at least 2 or 3 times in a year. हो सकता है शुरू में वो biasness नहीं हो, क्योंकि शुरू में इतने marks दिए ही नहीं है, but after 20 marks वो biasness आने लगे, and then again after 40 marks, so that helps. So ठीक है, someone else was also, I think Stuti, you were saying something. Yes, sir. So even I faced the same problem. I used to get biased when I used to solve one coaching mocks, and then I had solved the previous years like almost 3 to 4 times, because I wanted to get used to the consortium's reasoning. And then the problem was that I was not improving. The score never really improves in logic when you start your preparation. At the start of my preparation, there was a gap in my reasoning and the answer keys reasoning. So that is when the DCS groups and everything, that helps a lot. I used to almost type really long messages wherein I would put my own rationale as to why I think, let's say, option A is correct, and then why what the answer key says, why option C is correct, and then the teachers are able to actually cater to your doubt in a better manner, and then it will not really improve in 4 to 5 marks. It will take months, and then you will get to like a 20 plus score in logical reasoning. Not really consistent, but if you get a medium difficult LOD mark, you will be able to score really well. I think just to add to what Stuti just said, because I myself I've been teaching logical for many years now. Logical में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, that is बहुत स्मार्ट तरीके से एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव समझना, और उसका ऑपोजिट होता है लकीर का फकीर होना. सो यहाँ पे जो बहुत लकीर का फकीर होता है, वो एक जगह पे जाके स्टक हो जाता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर टाइप का आंसर निकला. अब आपने कोई 3 मॉक के बाद आपने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखा, और आपने बहुत मैकेनिकली उसी पर्टिकुलर टाइप का आंसर मार्क कर दिया. वहां पर वो सही था, यहां पर वो गलत हो गया. एंड नाउ व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद योर मेंटर्स, डिस्कसिंग विद द फैकल्टीज, आप बोल रहे हो सर यहाँ पर तो ये ऐसा था, बट यहाँ पर ऐसा क्यों? वहां 2+2 4 है, तो यहाँ आप 2+2 को 4 क्यों नहीं बोल रहे हो, या फिर आप यहाँ पे 3+1 को 4 क्यों नहीं बोल रहे हो? बट वो जो सटल नुआंसेस होते हैं कि वहां पे ऑप्शंस कैसे बने हुए थे, कैसे स्ट्रक्चराइज थे, क्या लैंग्वेज यूज हुई थी, यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज हुई है, उसके हिसाब से आंसर कैन स्टिल चेंज. नाउ दैट डजंट मीन कि कंसेप्ट गलत है, दैट डजंट मीन कि आपको कंसेप्ट के अगेंस्ट जाके आंसर मार्क करना है, पर वो जो एक छोटा छोटा ग्रे एरिया बहुत बार होता है, वहां थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होती है कि यार हो सकता है कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस बिल्कुल गलत थे, और एक ही बिल्कुल, तीनों की लैंग्वेज ही ऐसी थी आप उसको मार्क कर ही नहीं सकते थे, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी मार्क कर दिया. बट यहाँ पे ए और बी की लैंग्वेज ऐसी थी जिसको मार्क नहीं कर सकते थे, सी और डी दोनों की लैंग्वेज अच्छी लग रही है. तो वहां पे देयर वाज जस्ट वन ऑप्शन, यहाँ पे आई एम कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस. इट्स तो वो जो नुआंसेस होते हैं वो समझना. सो लॉजिकल, लीगल, टू एन एक्सटेंट इवन इंग्लिश, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव. कंसेप्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिस का यहाँ पे रोल ये होता है कि आप समझ पाओ कि एग्जामिनर ने ये वर्ड क्यों यूज करा. जहां पे वो मे कह सकता था उसने शैल क्यों कह दिया, वहां पे उसने विल क्यों कह दिया, जहां मतलब सो क्यों, जिसको हम एक्सट्रीम वर्ड्स कहते हैं बहुत बार. तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद भी आपको समझ में आएगा दैट्स नॉट साइंस. अल्टीमेटली ये सब सेक्शंस के बहुत परफेक्ट आंसर्स, और जीके एंड क्यूटी में परफेक्ट आंसर्स होते हैं. बाकी तीनों सेक्शंस में कुछ कुछ आंसर्स होंगे जो विल बी द बेस्ट आंसर रादर देन बीइंग द परफेक्ट आंसर. So you'll still have to settle with the best answer. ठीक है. यार तुम लोग तो सब काफी स्मार्ट से स्टूडेंट्स हो,
और बढ़िया बातें करते हो और वेल रेड हो, वेल रेड पे सभी ने हाथ उठाया था, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो सालों से, व्हाई लॉ इज अ करियर? आई मीन इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये वो, मतलब कितना कुछ कर सकते थे। और लॉ, लॉ तो सुना होगा ना, जो हमारे टाइम से और मेरे भी पहले के टाइम से, वो कि यार जो कुछ नहीं करता है वो लॉ करता है, और तू आर्ग्यू बहुत करता है, तो वो जब जो ये सब जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। सो सो व्हाई लॉ इज अ करियर? मनुजा, यू द फर्स्ट वन टू रेज योर हैंड। Like कहाँ से I वो कीड़ा want सबसे पहले दिमाग में आया? I wanted to get paid based on what I had read. So ओके, that's why law. And I got interested when we studied the Constitution in school when I was what 10 or 11 years old. So फंडामेंटल it's राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, Mhm. ठीक है, सो वहां से इंटरेस्ट आया। ठीक है, एनीवन एल्स? आशुतोष? I started developing an interest in newspapers around class 7 or 8. So it used to get delivered every day to our house, and I picked up some pages of it, and I found the international affairs page really interesting. And I gradually improved this interest in the field of humanities, like issues of importance in our society around us. And I felt like I definitely had to choose something as my career related to that. Prior to that, I was attending IIT JEE coaching, and even after class 10, after I got good results, everyone was like, yeah, you should just go with the flow and choose science stream, which I ended up doing. But then I kind of bolstered my belief that I could chart my like a sort of different thing, because no one in my family is a lawyer, and we don't even know many lawyer friends or anything like that. But I picked up a CLAT question paper and I went through the sections. I found that each of those sections really interested me. And I would also say that maths was one of my best parts because I have always been good in it. So I felt like this would be an exam whose preparation process and the strategies I'm going to devise, I would really enjoy that. So I stopped going to any IITJ coaching, and I, throughout class 11 and 12, I focused on these 5 sections. And I also used to read so many articles about the prospects you have after joining a great law school, and everyone obviously dreams of NLS. I used to see the moot courts happening, and I've also been a keen and avid debater. So I developed this interest in public speaking a long ago, and I felt like law would be a career which I would be able to harness that skill of mine. And I ended up choosing it, and I love it now. Perfect, very good. Aditya? Sir, if I'm being Aditya and then completely Shiny. honest, sir, Hmm. I chose law because of a series called Suits, sir, if you're familiar. Sir, I was a big fan of काफी लोग Suits. ऐसी नावों पे सवार होंगे। कितने लोग? एनीवन एल्स जिसका इंटरेस्ट सूट से डेवलप हुआ था? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 लोग। कितने लोगों ने सूट्स देखा है? कितने ने सूट्स देखा है? बॉस्टन लीगल, एनीवन? बॉस्टन लीगल सूट्स का प्रेडेसेसर था। किसी ने बॉस्टन लीगल देखा है? मनुजा एक ने देखा है, और कौन? अच्छा, श्रेया। ओके ओके, ठीक है। हाँ, आदित्य, यू वर सेइंग समथिंग। सो योर इंटरेस्ट That, गॉट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द टीवी सीरीज सूट्स। yes, sir, Harvey Specter. ठीक है, सही है यार। So अच्छा तुम mine लोगों ने is तुम लोगों ने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा तो ठीक है। कितने लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा है बताओ? ब्रेकिंग बैड, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, आई थिंक समवन वाज सेइंग समथिंग। Sir, I was saying that my first memory of a lawyer is this used to be the show called Adalat that used to come on Sony TV. That's my first memory of a lawyer. I think that instilled. I used to love that show. I watched it with my family every weekend. So ओके ओके, शाइनी? Sir, I'm really passionate about women empowerment and environment protection. So I wanted to be in the judiciary for like a long time. So that is why I chose law as a career. करियर, ठीक है, दैट्स गुड। Sir, I've got यश, another thing to say. I हाँ feel दक्ष। कि we all got opinions to say, but law gives us the power, the authority to make those opinions stronger. So when you say out your opinions bina power of law, so it's basically useless. But law gives us that power to implement them as well. लॉ इज अ फैंटास्टिक टूल दैट वे टू ब्रिंग रियल चेंज इन द Yeah, yeah, सोसाइटी। बिना right. उसके आप सिर्फ चाय पे, कॉफी पे आप सिर्फ बातें कर रहे हो, हाँ, बट अगर एक्चुअली फील्ड पे जाके कुछ करना है और रियल चेंज लाना है, तो
टूल्स और भी होते हैं, बट लॉ इज ऑल्सो through judiciary, through litigation, it's a genuine tool, and it's a very fair point that Daksh has made. मतलब ये वैसा नहीं कि सिर्फ मतलब एक कुछ चीजें होती है कि अपने को अपने एज पे लगती है ऐसा होगा, फिर बड़े होते तो पता चलता है ऐसा था ही नहीं। बट ये वैसी चीज नहीं है। तो आप जितने बड़े होगे तब उतना समझ में आएगा कि यार लॉ के थ्रू ही सोशल चेंजेस आते हैं सोसाइटी में। तो तो ठीक है, एंड वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी, क्योंकि अगर आपने लॉ में चेंज कर दिया तो सब लोग के बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज होने लगते हैं। तो जैसे कि अभी अपने जो क्रिमिनल लॉज अभी चेंज हुए हैं, तुम देखना उस हिसाब से सोसाइटी में अगले कुछ सालों के अंदर बिहेवियर्स चेंज होंगे। सो दैट्स हाउ इट है। जैसे कुछ सालों पहले वो लॉ आया था कि नेशनल एंथम कंपल्सरी प्ले होगा बिफोर अ मूवी स्टार्ट्स एंड पीपल हैव टू स्टैंड अप। सो तो लॉ आया था, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, बट अगेन दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। प्रज्वल। I was comparatively pragmatic about the whole thing. Like I had a good hand in like science and biology, and commerce was easy because it's just like basic mathematics with some extra principles. But I realized that when I consider the competitions themselves, there's IIT, and everyone in India is crazy about IIT, especially the old-fashioned people. Then there's NEET, and NEET has a lot of competition as well. And I could have could have given NEET or IIT, but I wouldn't have been able to do significantly well. I would have gone somewhere, but it wouldn't have been good enough for me. And then there's CLAT, which is like, firstly, it was very compatible with me. Ever since I was a kid, I've been reading, and it was also easy. I mean, this is this is a controversial opinion, like because the fact is that IIT and NEET they have way more competition than CLAT. And so I just thought to myself in ninth or 10th, like, do I want to like work really, really hard and like go to IIT or NEET? But I wasn't that passionate. So I was like, CLAT is like the best option for me. And like personality wise, it's also compatible. So I went Perfect. with CLAT as my like law as my career. सही है, सही है, ठीक है। ये भी काफी कैंडिड था, बट ठीक है, that's a good point you've made. ठीक है, anyone else before we move on to the last question? Yashasvi. Firstly, I disagree with Prajwal. Commerce is not just math with some principles, it's a lot more than that. But that's not something I'm going to discuss. I agree with Daksh. We need to express our opinions and all of that. But why I choose law, like particularly CLAT, is because I admire knowledge. I love it when someone is knowledgeable, someone knows things and has the capability to analyze them, to put their point of view and put their opinions, weigh the pros and cons and all of that. And that is something that drives me to go for CLAT. Going for law was decided in like back in seventh or sixth. I don't even remember that because मेरे को कभी नीट या जेई के लिए नहीं जाना था। मेरे टीचर्स बहुत बोलते थे कि तू जेई कर लेना, तू नीट कर लेना, बट आई नेवर वेंट फॉर दैट। CLAT इसलिए डिसाइड किया बिकॉज NLUs हैव अ बेटर एक्सपोजर, दे हैव अ बेटर फैकल्टी, एंड वहां पर जो आप सीखोगे वो आप किसी भी लोकल लॉ स्कूल में नहीं सीख पाओगे। और जुडिशियरी में मुझे नहीं जाना था, सो लाइक ऐसा भी नहीं कि बस डिग्री पानी है उसके बाद में एग्जाम देके मेरे को जुडिशियरी में जाना है। So that is why I chose law and particularly CLAT. Okay. I would like to say I agree with Yashasvi. She's right. Commerce is a very respectable and useful like career. But the fact is that, until 10th, you have been studying maths and science, but you have not been studying accounts or economics. And what that means, what that implies is you will be studying the ABC of those subjects, like in the equivalent. And like, for example, in the 1960s, they used to teach the ABC in English in class 6th. And does that mean that they were like, for them it was difficult and was like, like useful, but for us it's basic. And the fact is that commerce comparatively, it starts off easier and it does not develop you to the same extent as the science streams. So for me it was easy. Might not be for everyone else.
what were your distractions and उन urges को control कैसे करा अगर कर पाए थे तो? Web novels. Prajwal. I used to read. There were times when I read web novels for the whole day, like 9 hours straight. I was just reading a fiction book, and I tried to like stop and just not read. But then I realized my English was getting weaker, like my reading sections were getting unstable. So I went back to it, and it was fun. And then I tried to limit it, obviously, because I was able to abstain from it for a few days. Otherwise, Perfect. there were no like specific like distractions for me. No other distractions. Anyone else? Ashutosh. One of the major distracting factors was my lack of concentration. After I would do like one or two passages, initially I used to get fatigued mentally, and I would just go from my table to the bed and just lie down and say I'll just watch one or two videos, and that 5 minutes usually turns into 20. And then you think about, okay, I'll start studying from a whole number time like 8:30, and that also passes by. So I had to really ensure that I was not getting tired of these passages and that I actually enjoyed reading them. So I read articles from Eon every day. Those were really lengthy, but I would not disturb myself until I finished them. And obviously, when the GMB books came, they had the time limit set. So I used to put my stopwatch on, and I would solve the entire section. Then I would check the questions, grade myself what the marks were, and then I would move on to another book. Like if I did English, then I'd move on to logical next. So I did one assignment from each of these subjects, like 5, so every day for the last 1 month. And some days, obviously, I couldn't. But yeah, I ensured that I was not getting too ADHD sort of. The distraction that you're talking about is वो YouTube पे एक वीडियो देखा, सोचा था एक वीडियो देख के खत्म हो जाएगा, बट जैसे वो एक वीडियो देखा उसके recommendations के साइड में एक और भी आ गए, उस पे किसी एक पे क्लिक किया, फिर वो देखा, फिर और recommendations आए, फिर कुछ और, फिर उसके कमेंट्स पे गए, फिर वो कमेंट्स पे किसी और वीडियो से उसका कंपैरिजन हो रहा है, किसी और की बात हुई है तो फिर उस पे सर्च किया, एंड देन एक और, एंड देन एक और, एंड देन एक और, एंड बिफोर यू नो इट 2 घंटा जा चुका है. And this So was it's supposed to better be a to 5 minutes break. it's better to not pick it up until you have accomplished your own targets. So I set like my own personal targets after I studied for like 2 hours or something. Obviously, your breaks are good for you then. Just do your work first. Understood. Anyone else? Aditya? Sometimes Sir, I'm a huge sports fan, and in 2023, sir, there were like मतलब बहुत सारे tournaments was like the cricket World Cup was there. I am a F1 fan, so I used to watch that also, the Asian Championship and also everything. But yeah, if I make a schedule and you make it planned, then I think you can manage it easily, quite easily, because CLAT is not something that requires rigorous hard work like 16 to 14 hours you have to study. So if you plan it and then even go to your interest, it's fine. You can do that. Sports, ठीक है. Anyone else? क्या distraction था? Because sometimes Stuti? I used to feel कि so most distractions are anticipated, so you plan them कि how you will go about them. But sometimes it used to happen कि when you are mentally very down, emotionally very down, so you can't have the same concentration level, and it could be due to many reasons, due to your academical things or maybe personal things. So then it used to be very difficult to study then. So when you are already feeling, मतलब when you are already down, when your scores are not increasing, जब already distracted हैं, तो उस टाइम पे distractions को control करना काफी difficult हो जाता है, क्योंकि वो फिर वो अपने को अपनी current condition से दूर लेके जाते हैं distractions. तो उस टाइम पे तो in a way distractions अच्छे भी होते हैं to an extent. तो ठीक है, स्तुति? So I'd say I was a dropper, so social media is a really huge distraction. When you see like your friends going to some or the other college, and you know the freshers that's happening and everything. So for the droppers, I'd say guys just stay off of social media. And another distraction would be Telegram. You have like so many group chats, so many materials getting circulated. I could just not help solving every and any mock I'd see, because the answer keys are also there. So it's like too tempting for you to solve.
And the GK magazines of every other coaching, it's just too much. So yeah, Telegram pay, you have to be careful. That was a huge distraction. Yeah. Also, sir, just to add with respect to YouTube videos, so I also went down into a cycle where I was going on YouTube and then searching for CLAT, topper stock, strategies, motivation, and this and that, and just going on strategizing how my month or 2 months would look like. So I'd say this is watching such videos, even this one, a topper stock, sometimes a video once in a while is good. It will help you relieve some stress and then look at some people who have really cleared it. But just going on in a loop and just going on watching those videos won't really help you improve your score. Solving questions and then doing the hard work will do that for you. And then secondly, with respect to what was already said about sports, so sports was also became a distraction for me to a large extent, because I was so addicted to a particular sport, that is tennis for me, that I had to play it every day, and then खेलने के बाद आप थक जाते हो, then you go on, then you take rest, and then पूरा दिन खत्म हो जाता है. So I'd say limited to a certain extent, जहाँ पे कि you are only relieving stress through that distraction that you have, and it isn't taking up the time that you have allotted to studies. And the first, in fact, जो फर्स्ट पॉइंट बोला, ये काफी बार मैं भी अपने यूट्यूब वीडियोस में कवर करता हूँ कि लोगों को इसका भी एडिक्शन, लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियोस का एडिक्शन हो जाता है. और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखा और फिर उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया, और फिर जैसे ही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने का दूसरा स्ट्रैटेजी वीडियो आ गया. So there is a 90-day strategy video, there is a 85-day strategy video, there is a 80-day strategy video, 75-day strategy video, and then there is a 60-day strategy video, and then a 2-month strategy video. तो अब वो and essentially करना वही कुछ चीजें हैं, and then it's about execution of those things, and it's about implementing those things and keeping the distractions at bay, and फिर वही है. But yeah, that's very important. The best strategy for you will be what you figure out by doing the wrong things and then coming to what's right for you, rather than someone telling you on YouTube what you should do in the next 60 days. I think कोई जेनेरिक स्टार्ट कर सकता है, कोई बहुत जनरल इस दिशा में चलना चालू करो. बट आप जब चलना चालू करोगे तो फिर आपको अपने अलग अलग रोड ब्लॉक्स दिखेंगे, और वो रोड ब्लॉक सबके अलग अलग होंगे, और फिर आपको रोड ब्लॉक्स को कैसे हटाना है, उस पर कैसे काम करना है, वो देन इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल जर्नी. तो दैट्स यूजफुल. ठीक है यार, आई थिंक लेट्स रैप इट अप. बट बिफोर रैपिंग इट अप, किसी ने अभी से डिसाइड कर लिया है कि आगे क्या करना है, और कितने लोगों ने डिसाइड नहीं करा है? कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आगे क्या करना है? कितने लोग? यशस्वी wants, anyone else? यशस्वी, you want to go into litigation? ठीक है, that's good. Anyone else? किसी और ने डिसाइड किया? Perfect, good. I'm tilting towards international law, but I'll see what happens there, because after you get there, you get a lot of exposure, and I would get a better sense of what the opportunities actually are. That's exactly. So it's good if you have decided. It's even better if you have not decided. क्योंकि अभी you don't even know what you don't know. अभी वो वाले फेज में तुम लोग, अभी अपने को कुछ भी नहीं पता है. अभी तो अपन एंटर हो रहे हैं. अभी तो अपन ने से उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी है, उसको अपन ने एस किया है. सो एक्चुअल लॉज और कॉर्पोरेट क्या होता है, लिटिगेशन क्या होता है, अभी हमारे लिए कॉर्पोरेट सूट्स है. अभी हमारे लिए लिटिगेशन जॉली एलएलबी और तारीख पे तारीख है. तो अभी हमारे लिए जो भी है वो बस एक कोई स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे टीवी सीरीज और मूवीज और बुक्स के थ्रू हमने वो देखा है. तो रियल डील तो अब हमें अगले 5 साल पता चलेगी, तो तभी फिगर आउट करना चाहिए. दैट्स गुड. So one thing that every CLAT giver should know, like even a fresher or a dropper, is that you need to listen to your mentors. Like बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ग्रुप चैट पर हो या फिर आप जिस भी कोचिंग में जाते हो, वहां पर जो आपके जो फ्रेंड्स है या क्लासमेट्स है, आप उनसे डिस्कस करने लग जाते हो कि आप कहाँ वीक हो या फिर कहाँ दिक्कत आ रही है. आप उनके सजेशंस लेने लग जाते हो, एंड दैट इज जस्ट
रॉन्ग इन माय ओपिनियन, बिकॉज उनके जो ओपिनियंस है वो सब्जेक्टिव है, उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर है। लेकिन जो आपके मेंटोर्स बोलते हैं वो उन्होंने जितने भी 100,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उन सभी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद में आपको कोई गाइडेंस या कोई टिप मिलती है किसी मेंटोर से। So like listening to your mentors, trusting your mentors is more important than listening to anyone else. Like you start comparing yourself to your classmates, which is very wrong. You need to compare yourself to yourself, your past self. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत सालों से ये हम लोग भी ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, क्योंकि इन एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर्स इंक्लूडिंग भोपाल में हम सालों से देख रहे हैं कि जो बहुत सारे बच्चे ना हॉस्टल्स में रहते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे आते हैं बाहर से आते हैं, तो हॉस्टल्स में रहते हैं। तो और हॉस्टल में रोज रात में पंगतें होती हैं, 2-2 3-3 घंटे 4 घंटे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और जब भी ऐसे 3-4-5 लोग डिस्कशन करें तो नेचुरली 2-3 नेता उसमें उजागर होते हैं। एंड दीज नेता पीपल, उनको सब पता रहता है, उनको क्लैट, एलेट, IIT JEE, नीट, UPSC, उनको 17-18 साल की उम्र में उनको सब पता है। तो और उनका फ्रीक्वेंट वो चलता रहता है कि यार अबे ये जो इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का ये जो मॉक्स दे रहे हैं ना, ऐसे आते नहीं है, वो मुझे पता है ना यार, क्योंकि मैंने उनसे बात करी। और अब क्यों पर तो मत जाओ, मुझे पता है ना यार, उसमें क्यों वाली क्या बात है, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, ऐसे ही होता है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, ये यहीं से पढ़ना है। अरे उनको कुछ नहीं पता है यार, उनको एंड जस्ट उनको कैन बी एनीवन, उनको कैन बी द मेंटर, टीचर, कोचिंग, ये वो, पेरेंट्स, उनको नहीं पता, मुझे पता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड बिकॉज दीज आर योर फ्रेंड्स, तो आप उनकी जनरली आप उनकी बहुत सारी एडवाइस मान रहे हो और आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पर उनकी एडवाइस को अलग रखना, और ये समझना कि भाई अभी हम सब सेम नाव पे है, वो भी मेरे साथ उसी नाव पे है। तो वो अभी एडवाइस देने को दे सकता है, बट इस टाइम पे वो मानना ही नहीं मानना है, मतलब वो वहां बहुत गड़बड़ होता है। तो जैसे मैं पहले बताऊं, इस पे एक किस्सा बताऊं कि अभी तो कंसोर्शियम पेपर कराता है, बट टिल 2018 और 18 हर नेशनल स्कूल अलग अलग साल पेपर कराता था। सो कंसोर्शियम वाज नॉट देयर था। तो एक साल, सो 2008 वाज व्हेन क्लैट स्टार्टेड। 8 बैंगलोर ने कराया, 9 हैदराबाद ने कराया, 10 भोपाल ने कराया, 11 कोलकाता, 12 जोधपुर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 17 शायद कोची वोची की बारी आ गई थी, 17 या 18। तो ये जो अपने नेता लोग होते थे जो हॉस्टल्स में पाए जाते थे, वहां की पंगतों में और डाइनिंग रूम्स में जो पाए जाते थे, तो उस टाइम पे नैरेटिव ऐसे चलते थे कि अगले साल, क्योंकि लेट्स से गांधीनगर पेपर करा रहा है, GNLU गांधीनगर, एंड गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, तो अल्कोहल के अराउंड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मतलब ये एक्चुअल पॉइंट्स थे जो उस दिन बच्चे, सर हमने सुना है अल्कोहल के अराउंड कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, तो सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर गुजरात पेपर करा रहे हैं, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। या फिर मुंबई करा रहे, तो सर मुंबई के लोग काफी चिल्ड आउट से होते हैं, और मुंबईया लोग होते हैं, सर काफी चिल्ड आउट पेपर आने वाला है क्या इस बार? सर कोची करा रहे हैं, सर वो तो साउथ इंडिया, सर साउथ इंडियंस तो सर ऐसा नहीं हो, साउथ इंडियंस पे क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब लेट्स से लीगल एज अगर करा रहा है, लीगल एज इज भोपाल बेस्ड, तो क्या लीगल एज सिर्फ भोपाल की क्वेश्चन पूछेगा क्या? या भोपाल में जिस एरिया में हम लोग हैं, MP नगर, क्या सिर्फ MP नगर के क्वेश्चन पूछेगा? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो बट ये सब ज्ञान वहां से निकला करते थे। तो इसको बाल की खाल निकालना बोलते हैं, कि बहुत सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट करना अननेसेसरी। तो और ऐसा भी तो हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है, वो सब करना, दैट दैट डजंट वर्क। तो ठीक है यार, आई थिंक लेट्स एंड इट। दिस वाज अ फैंटास्टिक सेशन। 1 घंटे के ऊपर हो गया, कब हो गया पता ही नहीं चला। सो आई होप एवरीवन here enjoyed it a lot. I hope everyone who is will be watching it over the next many years will enjoy it a lot. Fantastic bunch of students here. Students जो 99.9% स्टूडेंट्स को पीछे करके टॉप 0.1% में आए हैं in CLAT 2024. So I think everything that these guys have said over the last 1 hour should be taken super seriously. And so all the very best to all of you firstly, and all the very best to everyone watching this. So let's end it here, and that's it. So thank you so much, guys, and all the best, everyone. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.